अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्विक बुक की क्विज़ नंबर 4 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो इससे पिछली वाली 3 जो क्विज़ हैं वो मैंने की हुई हैं, जिनका रिज़ल्ट भी आ रहा है। तो वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि क्विज़ नंबर 4 का जो मेरे मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, प्रोग्रेस बिलिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग फॉर इन्वेंट्री एज यू सेल इट, billing a client as work on a project, billing a client upfront for a project, प्रोवाइडिंग क्लाइंट विद एन एस्टिमेट फॉर ए जॉब। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि बिलिंग ए क्लाइंट वर्क ऑन प्रोजेक्ट। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच लिस्ट वुड contain the name of all the vehicle, furniture and equipment that you own. Item, fixed asset, payables or chart of account which contain the name of all vehicle, furniture and equipment that you own. तो ये फिक्स एसेट में आता है। सेव एंड नेक्स्ट। Money, money is received from cash sale automatically goes into which account? Saving account, checking account, expense account, on deposit fund account। कि अगर receive from cash sales, saving account, checking account, expense account, तो इसका जो सही जवाब है ऑटोमेटिकली गोज इनटू विच अकाउंट? चेकिंग अकाउंट, ऑन डिपॉजिट फंड अकाउंट, इसमें जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। विच लिस्ट वुड आई यूज टू क्रिएट ए न्यू बैंक अकाउंट? आइटम लिस्ट, चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, कंपनी बैंक अकाउंट। Which list would I use? Inventory, item list, chart of account list, company bank account, chart of account list, इसमें आएगा। Save and next. The system of recording your bill as they come and paying them when they are due is called the account payable method. Recording your bill as they come and paying them when they are due is called the account payable method, the account receivable, the account transfer, the accrual basic accounting method। तो ये फर्स्ट वन आएगा, account payable method। Question number 6, how do you know in QuickBook if the invoice was paid? Check in the customer center, check bank register, open the invoice and see paid stamp, phone the customer। How do you know in QuickBook if the invoice was paid? QuickBook में अगर invoice paid हो तो उसको कैसे चेक? इन दी कस्टमर सेंटर। कस्टमर सेंटर में हम इसको देख सकते हैं। इनवॉइस का ताल्लुक कस्टमर से है। क्वेश्चन नंबर 7, यू रिसीव ए चेक इन द मेल फ्रॉम ए कस्टमर फॉर पेमेंट ऑफ सम गुड्स दैट दे परचेज फ्रॉम यू लास्ट वीक। Which from would you use to record this transaction? Cash received from, receive payment from, invoice from,
check payment from, तो receive payment, check payment from, receive payment. Question number 8 है, how can you verify whether a certain bill was paid by the company? How can you verify whether a certain bill was paid by the company? Look in the account receive ledger, look in item list, look in the interbill from, look in the invoice form, look in the interbill. इसमें बिल में आएगा जब हम अपने वेंडर को पे करेंगे तो उसमें देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चेक स्टाइल, चूज इन क्विक बुक, स्टैंडर्ड, कस्टम, वाउचर, वैलिड. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए चेक स्टाइल, इसका कंफर्म नहीं हो रहा जी. कस्टम, वाउचर, इसको हम वाउचर कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट शुड वन इवेंचुअली डू विद द मनी इन द अनडिपॉजिट फंड अकाउंट? ट्रांसफर द मनी into a bank account, do a bank reconciliation, leave the money, तो यूज़ द मनी टू पे बिल्स. इसको हम रिसीव पेमेंट के बाद अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे. तो अभी देखते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं जी, कितने क्वेश्चन सही हैं. तो ये देखें जी, क्विज़ नंबर 4 के 8 मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ 10. तो ये कदर बेहतर हैं. तो ये अगर क्विज़ आपको आ जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. एक तो वो डाउट था उसको देख लीजिएगा, और एक आध कोई और गलत है सवाल जवाब. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.